आम गत वर्ष 2023 सेप्टेम्बर मासरे होइतिबा RHT मेन परीक्षार किछि PYQs को डिस्कशन करवा। तो आपण मैंने यहपरी भाव लगातार आम सह जोड़ी हो रुहतु से देखिपे आपण 2023 सेप्टेम्बर। तो प्रथम क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड मे बी कैटेगराइज्ड एज लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। पेडागोजिक सेक्शन रही। तो लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रु तो चारोटी ऑप्शन मध्य कौटा ठीक हम तार आंसर देख पारे लास्ट अच्छे ऑप्शन डी लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 2 ए टेस्ट इज वैलिड फॉर द पर्पज फॉर व्हिच इट इज यूज्ड देन आंसर है इट हैज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आज प्रपोज्ड बाय कार्ल रोजर्स इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द काउंसलर तार ऑप्शन एठी एस्टैब्लिशेस ए गुड रैपोर्ट विथ द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 a mathematics teacher distributes in his class some plain figures of different shapes to help them learn the concept of area. He is following the theory of तो सी ये चारोटी ऑप्शन मध्य कहार थ्योरी की फॉलो करुच्ची तार आंसर है जीन पियाजे थ्योरी को फॉलो करुच्ची। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग रो क्योंटा कैरेक्टरिस्टिक नुह तार आंसर है ऑप्शन बी इट ऑलवेज रिजल्ट इन ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। तो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट संपर्क में तो चारोटी ऑप्शन मध्य क्योंटी ठीक तो आंसर है इट अमाउंट्स एन एक्स्ट्रा वर्क टू द टीचर्स जोटा कि भूल। तो क्वेश्चन अनुसार यहाँ ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द सेम टेस्ट अंडर द सेम कंडीशंस। तो आंसर है रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स लर्नर सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तार आंसर है स्टूडेंट्स डिस्कस द इश्यूज अमंग देमसेल्व्स। तो यहाँ गोटे हो लर्निंग सेंट्रिक टीचिंग अप्रोच पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 9 फॉर असेसिंग हायर मेंटल एबिलिटीज फॉर लर्नर्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट आइटम यहाँ भर ऑप्शन ए ओपन एंडेड टाइप। Then question number 10 which of the following statements is not correct for standardized test। standardized test संपर्क में यहाँ भर क्योंटी भूल। तो आंसर है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन यूज देम एज ही लाइक्स। क्वेश्चन नंबर 11 which of the following strategies when adopted by the teacher acts as best motivator for students। तो आंसर है ऑप्शन बी सीकिंग स्टूडेंट्स कोऑपरेशन। Question number 12 a collection of learners work sample on various learning tasks over a long period is technically called as। the answer is your portfolio। Question number 13 which of the following is the highest level of learning। the highest level of learning ये चारोटी ऑप्शन मध्य क्योंटी तो रिफ्लेक्टिव लेवल हो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14 while developing a selection test for entrance to a course which of the following types of validity is considered important। the answer is predictive validity। Question number 15 which of the following approaches to teaching is teacher centered। the answer is demonstration method। Question number 16 which of the following is not an appropriate strategy for learning through constructivist approach। the answer is encouraging students to read textbooks। Question number 17 the law of readiness in the context of learning process was given by। the answer is Thorndike। Question number 18 which of the following may be used as assessment tool for constructivist teaching learning process। the answer is open ended easy test। Question number 19 which of the following is not a characteristic of summative assessment। तो summative assessment रो केउटा गोटे characteristic नुहे। The answer is option A helps the teacher to modify teaching।
Question number 20. Some teachers ask the students probing questions during the teaching learning process. This is called, the answer is formative assessment. Question number 21. No person shall be deprived of his dash or personal liberty except according to the procedure established by law. So it is GS पढ़े आसला. The answer is option C, life. Question number 22. To whom is the Chief Minister and his cabinet collectively responsible? तो collectively responsible कहा प्रति? तो legislative assembly प्रति से collectively responsible. तो question number 23. Freedom is my birthright. Who said it? स्वाधीनता मोर जन्मगत अधिकार है किए कहितले बाल गंगाधर तिलक. तो क्वेश्चन नंबर 24. 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ 11th शेड्यूल आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही है क्या डील करे? तो आंसर है जो पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत. क्वेश्चन नंबर 25. इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रीटेड एज ट्रांसफर सब्जेक्ट? ट्रांसफर सब्जेक्ट बोली किए थिला से? तो एजुकेशन थिला हमर ट्रांसफर सब्जेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 26. आर्टिकल 19 डज नॉट मेंशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 19 ये चारोटा ऑप्शन मध्य क्या मेंशन करेनि? तो आंसर है राइट टू एम्प्लॉयमेंट. क्वेश्चन नंबर 27. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 51A जो कॉन्स्टिट्यूशन हम रही तो ये चारोटा ऑप्शन मध्य केउंटी नुहे से मध्य. तो आंसर टू सपोर्ट ऑल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डे. क्वेश्चन नंबर 28. Who among the following has the right to speak or otherwise take part in proceedings of either house of parliament? The answer is attorney general. Attorney general जी मेंबर नुहे किंतु से प्रोसीडिंग रे पार्ट नहीं पारिबे किंतु केवल से मानकर तांकर अधिकार ना से वोट कर परिबे नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 29. The resolution for Quit India movement was passed in which city? The answer is Bombay. Question number 30. Who was the most important scientist associated with the Manhattan Project? The answer is Robert Oppenheimer. Question number 31. Which of the following rock edicts describe the Kalinga War? The Kalinga War को क्यों rock edict describe करे? The answer is option rock edict 13. Question number 32. Which of the following is not an original jurisdiction of Supreme Court as per Article 131 of the Constitution? The answer is a dispute between Government of India and foreign government. Question number 33. Which article of Constitution deals with Uniform Civil Code? तो Uniform Civil Code को क्यों article deal करे? तो answer is Article 44. Question number 34. In which city was Archduke Ferdinand assassinated? The answer is Sarajevo. Question number 35. What was the name of the series programs and projects F.D. Roosevelt enacted during the Great Depression? The answer is the New Deal. Question number 36. Preamble of Constitution of India does not list which of the following justice? तो preamble रे केउंटी मेंशन नै जोटा कि हमर अछि philosophical. The question number 37. The most striking feature of the Ashokan pillar. Ashokan pillar रो जो वैशिष्ट्य थिला से आंकड़ू केउंटी थिला most? The answer is police. Question number 38. Where did the formation of Azad Hind Fauj take place? The answer is Singapore. Question number 39. The materialistic view to achieve salvation is propounded by? The answer is Charvak School of Philosophy. Charvak कौन कहूला? ता फिलोसफी थिला जावेद जीवेत सुखेम जीवेत ऋणम कृत्य गृतम पिबेत. तो जे पर्यंत आमे बंचिबा सुखर सह बंचिबा ऋण कले भी करबा किंतु हम घियो खाइकी बंचिबा. Question number 40. Which of the following country was not a member of the Axis power? Axis power केउंटी गोटे मेंबर नथिला. तार आंसर इज फ्रांस. Question number 41. Development that meets the needs of the present generation without compromising the ability to future generation to meet their own needs is known as? The answer is sustainable development. The answer is question number 42. What is the largest available source of fresh water on earth? The answer is glacier and ice caps.
Question number 43. What is not true about physical quality of life index? The answer is it uses indicators like the life expectancy, infant mortality, and per capita income. Question number 44. With an initial deposit of 1000 and a cash reserve ratio of 5%, total credit that can be created by a commercial bank. The answer is 20,000. Question number 45. Pir Panjal is the largest, longest and most important range of Pir Panjal range Lesser Himalaya gote part. Question number 46. Which is not an example of metamorphic rock? The metamorphic rock ro example nuho koda the conglomerate. Question number 47. What is the functional unemployment? Functional unemployment कहले कौन हो जाए? A person who are unemployed temporarily while moving from one job to another. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି another ଜବ୍କୁ ଯେଉଁ ଖୋଜିବାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ତକ ଯାଏ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଦେଉ frictional unemployment. So question number 48. Which of the following is not true about the multidimensional poverty index currently being constructed by Niti Aayog? The answer is ownership of a mobile phone is an indicator of standard of living. Question number 49. Who suggested the need to move away from calorie based measurement of poverty in India? The answer is Suresh Tendulkar. Question number 50. October and November months give more rainfall in Coromandel coast. Question number 51. The rate at which commercial banks borrow funds from RBI is known as. The answer is repo rate. Question number 52. The 66.5 north of the equator is known as. The answer is Arctic Circle. Question number 53. Which of the following is not a correctly matched? The answer is bauxite Koraput. Eta correct answer. Question number 54. Which of the following methods of map scale is universal method? The answer is a representative fraction. Question number 55. Economic growth brought about a change in the structure of population of a country due to a fall in infertility rate and mortality rate is called. The answer is demographic dividend. Question number 56. Which one of the cold current The answer is Labrador current. Question number 57. Hygrometer is an instrument used to measure. Hygrometer कौन पे यूज करा जाए? The answer is humidity मापिया पे hygrometer यूज करा जाए. Question number 58. Which plateau is located between Aravali and Vindhya range? Aravali और Vindhya range भितर केउं plateau रही छि? तर आंसर इज मालवा plateau. तर आंसर इज मालवा plateau. Question number 59. Which employment program is mandated to provide at least 100 days of unskilled work in a year to rural people who seek employment? The answer is Manrega. Question number 60. Which among the following is not a poverty eradication program? The answer is Make in India. तो ये रहिला एटा हमरो पैसेज तो एटा को आपण टिके देखि नेबे. ये रहिला सेकंड पैसेज, ये रहिला थर्ड पैसेज, ये रहिला फोर्थ पैसेज, फिफ्थ पैसेज, ये रहिला पोएम टा भी आपण देखि करबे. नेक्स्ट पोएम तो ये आम रहा 71. Which is the correct pronunciation of ticket? तो ticket रो pronunciation correct कौन तो यार आंसर है B. Question number 72. The correct pronunciation of precious. तो precious रो correct pronunciation एटा D. तो question number 73. Houses can be transcribed as. तो आंसर है option A.
Question number 74. The correct pronunciation of village is. The answer is option B. Question number 75. Which of the following is a grammatically correct sentence? Option B. Tell me what your name is. Question number 76. Which one of the following is a grammatically acceptable? The answer option A. Question number 77. Which sentence is grammatically correct? The answer is option D. Question number 78. Which of the following is grammatically acceptable? Option C. Question number 79. Which sentence is grammatically correct? Option B. Question number 80. We dash Konark temple 2 years ago. The correct form of the verb is. The answer is your visited. 81. Which of the following is a complex sentence? The complex sentence option D. Question number 82. Rajesh said to his friend, "Are you free tomorrow?" It can be changed into indirect speech. Answer is option A. Rajesh asked his friend if he was free the next day. Question number 83. Who is knocking at my door? It can be changed into passive voice. By whom is my door being knocked at? Question number 84. My brother is good at mathematics. At mathematics. Question number 85. Question number 85. The principal wanted to know how many teachers were on leave. In which part of the sentence does an error lie? How many teachers? Question number 86. The bank manager rejected my request for a loan. The underlined verb can be replaced by turned around. Question number 87. I have no objection to whatever you say. The underlined noun clause acts as an object of a preposition. Question 88. All that glitters is not gold. Underline the subordinate clause. The bucket of red roses, dash very sweet. Smells very sweet. Question number 90. Which sentence is correctly punctuated? Option B. Question number 91. Which of the following words is not spelled correctly? Definition. Which sentence is grammatically correct? The captain along with his teammates is entering the field. Question number 93. The old man is too weak to walk. It can be changed into a complex sentence as. Question number 94. As soon as the match ended, it started raining. The sentence can be written using no sooner. No sooner the match ended than it started raining. Identify the sequence of language skills. Question number 96. Which of the following are two micro skills like sound, stress, rhythm and intonation etc. involved? Speaking re use kariyo. Question 97. In primary years, a learner's fluency, vocabulary power, imagination and creativity can be developed through storytelling. Question 98. Pre-reading involves skimming. Question 99. Which method of reading is based on the principle of sound-letter relationships? The phonic method. Question number 100. Slogans or instructions used by the road, on walls, advertisement, in hoardings, in newspapers and magazines come under the category of persuasive text. Question number 101. What is the effective strategy for the teacher to correct a student's writing? Locating patterns of errors and suggesting improvement.
Question number 102. Which of the following according to National Curriculum Framework 2005 is not an objective of language teaching learning? The answer is option C. Curricular practices should be in alignment with secularism, social justice and equality. Question number 103. Banishing mother tongue from English classroom is the characteristic feature of. The answer is your direct method. Question number 104. What is the purpose of continuous and comprehensive evaluation? The answer is to assess the level of competencies achieved by the students. Question number 105. The purpose of diagnostic test in language learning is to know the gaps, the tolerance, understanding. तो ये रहा हमारा ओडिया पैसेज तो ये आपने पढ़िए ये ओडिया पैसेज चार्टा ओडिया पैसेज पढ़ुची एवं चारिटा पोएम पढ़ुची तो केउंडी सारला दासंक कृति आंसर इज चंडी पुराण अर्थ कोइल स्रष्टा किए तो आंसर इज जगन्नाथ दास उपेन्द्र भंजक काव्य केउंटी तो आंसर इज सुभद्रा परिणय क्वेश्चन नंबर 114 केउंटी भीम भोई रचना श्रुति निषेध गीता लक्ष्मण षष्ठांग नाम कौन तो फकीर मोहन सेनापति क्वेश्चन नंबर 116 गोपाल चंद्र प्रहराज रचना केउंटी ननांक बस्तानी क्वेश्चन नंबर 117 केउंटी गोपीनाथ महांती कृति आंसर दाना पानी क्वेश्चन नंबर 118 गांधीजी सत्य पूजारी थिला यह वाक्यर सत्य केउ पद आंसर इज विशेष्य क्वेश्चन नंबर 119 सेमाने देश कथा चिंता करुले वाक्य सर्वनाम पद केउंटी आंसर इज सेमाने सामान्य कथार एत मनोमालिन्य कहीं आंसर इज विशेषण क्वेश्चन नंबर 121 शोष शब्दटी किपर गठित होइछि सुयुक्त अ केउंटी कृदंत पद चिन्हाई दियो बाह्य चैत्र शब्दटी किपर गठित होइछि चित्रा युक्त आ क्वेश्चन नंबर 124 गृहस्थ भावार्थरे य प्रत्यय होई केउ शब्द गठित होइछि तो आंसर इज गार्हस्थ्य क्वेश्चन नंबर 125 से आलस्य परित्याग करी कठिन परिश्रम करिबार परीक्षा सफलता लाभ कला तो आंसर इज सरल वाक्य क्वेश्चन नंबर 126 से धनी किंतु कृपण यही वाक्यर प्रकार कौन तो आंसर इज यौगिक क्वेश्चन नंबर 127 जे परोपकार से भगवान गौर प्रिय वाक्यर प्रकार दर्श तो आंसर इज जटिल क्वेश्चन नंबर 128 शुद्ध वाक्य शब्दटी जोटा तो आंसर इज शारीरिक क्वेश्चन नंबर 129 शुद्ध शब्दटी चिन्ह आंसर इज अनुकूल क्वेश्चन नंबर 130 शुद्ध शुद्ध रूपटी क्यों शुद्ध वाक्य रूप चिन्ह तार आंसर इज चंद्रयान 3 चंद्रावतरण अधिकांश लोक उत्पीड़ित हेले 131 शुद्ध वाक्यटी चिन्ह शशि प्रभा भाषण श्रोतृमंडली को चमत्कृत करथिला पवित्र शब्दर संधि विच्छेद कर पुयुक्त इत्र षष्ठ शब्दर संधि विच्छेद कर सयुक्त थ रेखांकित पदर कारक निर्णय कर तो आंसर इज अधिकरण कारक रेखांकित पदर कारक निर्णय कर चेरापुंजी रे प्रबल वर्षा हुए कर्ता कारक रेखांकित पदर विभक्ति निर्माण कार्य 2 मास संपूर्ण है तृतीय विभक्ति रेखांकित पदर विभक्ति निरूपण कर गोपाल पढ़ा को जाऊँगी चतुर्थी विभक्ति राजहंस शब्द क्यों समास अच्छी तत्पुरुष
सज्जन शब्द रे थिबा समासर नाम कौन तार आंसर हो कर्मधारय 140 अन्य नाम यही समास निष्पन्न पद बा समस्त पद कौन हो नामांतर घर बुड़ी पानी बांटुए ये अर्थ यार अर्थ कौन अवस्था असंभाल हवा चलू करदे यार अर्थ कौन हो आत्मसात करवा क्वेश्चन नंबर 143 सुख रूपे जहाँ जन नेत्रे दिशे हाथे आसे ताहू हाथू पढ़िया पाई से तो आंसर हो नटवाणी छंद निम्नलिखित केउं अलंकार व्यवहृत होइछि नहले ए घन कुंतला घन सहित तारा खसी पड़िबार धरारे बही जाउछि धारा तो आंसर हो उत्प्रेक्षा 145 प्रतिष्ठा लाभ करियछन्ति जे लब्ध प्रतिष्ठा अनुकूल यार व्याख्या कर कूलर समीप एटा हमर रहला पोएमटा एटा पोएट तो ये तो थिला हमर 150टा क्वेश्चन आमे नेक्स्ट मध्य आगो एहीपरी सीरीज को कंटिन्यू करिबा तो आपण माने एहीपरी भाबरे हम सब जोड़ी होई रहंतो धन्यवाद।